हरि ओम। ओम गंगे च मणि च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नदी कुरुद्रगा गंगा प्रवास कृष्ण एतानि पुण्यतीर्थानि पूजा काले ओम गंगे च मणि च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नदी कुरुद्रगा गंगा प्रवास कृष्ण एतानि पुण्यतीर्थानि देव स्नान काले भवन्ति। हम विष्णु अद्य पुण्यानि वैशाख कृष्ण नवम्यां धनिष्ठा-मकरे गुरु श्रीचन्द्रमसि चार्केतु मेषराशौ शुभे स्थितौ सुरतश्रमजीवेभ्यश्चाहमागत्य मन्दिरं सद्भक्त्याराध्य देवानं करोमि पूजनं प्रियं। श्रीकृष्ण राम बालाजी हनु श्रीनृहरीश्वरं श्रीगणेशाग्रपूज्येन गायत्री पावनीश्वरी श्रीभारती कनकसीता राधा मया सुपूजिता श्रीधनजानसुखैश्च परिपूर्णाय कामना यथा भक्तातृरूपाणां बुद्धेश्वरस्य मन्दिर निर्माणकृत संकल्पजनानामस्तु मङ्गलम्। श्रीकृष्ण शर्मणश्चिन्तारकेशसिंहदुहितुः गोपाल भ्रातृसुसौख्यं हेमन्त हिमतद्वयोः मारुत्यङ्कितसतीशोकमलज्ञानमाधवः हर्षगरीतिकास्तु श्रीलक्ष्मीनारायण कृपा सर्वेषां गोत्रजानां च भरद्वाजेन गौतम कश्यपकौच्छसाभ्यां च वत्ससादानं तु मङ्गलम्। पितृमातृकुलोद्धार हेतुनाहं च सततं भारतभ्रमणेनैव तीर्थाटनं करोमि च सम्मार्जना कृतमानसेविकाश्च परिसरे पूजास्थानदहं शीघ्रमुत्थाप्य कृतमार्जनं गुरुवासरनवम्यं बृहस्पते कृपाशिषं गुरुर्विषमायुक्ता राजतामत्र पूजने नमामि नर्मदं तपिं नमाम्यहं बुधेश्वरं नत्वाहं कनकेशं च नमामि सुरतेश्वरम्। ममोत्कलस्य जनानां दादनानां विशेषतः श्रिया प्रियाशिषास्तु श्री कनकवृष्टिसम्पदां हरि ओम्। ॐ अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं त्वमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपङ्गलीला मङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवत मुकुधा मुहुर्विदधते वदने मुरारे प्रेमद्रप्रणिहितानि गतानि मालाधृतोर्मधुकरीव महोन्मणेय सामे सिंहसुसागरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदमे ब्रह्मदानदख्य मानं दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशा निषेधतु मयि क्षणमे क्षणामिन्देवरोदरसहोदरमिन्दिराय आमीलिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्द आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आख्येकरस्थितकनीनिकपक्मनेत्रं भूतिर्भवेन्मम भुजङ्गशयङ्गनाय बाहुं तरे मधुजितासितकौस्तुभेज हारावलीव हरिनीलमही विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय कालाम्बुदालिललितोरसिकैठमारे धाराधरे स्फुरति धातडिजङ्गनेव मातु समस्तजगतां महनीयम् इर्भद्राणि मे दिशो भार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान्
मङ्गल्यवादि मधुमादिमिमन्मनेन मज्जावयमं सरमीक्षणार्थं मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकाय दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधार मस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशोभिषण्णे दुष्कर्म धर्ममपीयचिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि जया जया दृष्ट्या त्रिभीष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टि प्रहुष्टकमलोदरदीप्तिरीष्टं पुष्टिं कुशिष्टमम पुष्करविष्टराय वीर्येवतीति गरुडध्वजसुन्दरीति साकं मयसि शेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय तस्यै नमस्त्रिभुवनेकगुरुस्तरूणि श्रुति नमस्तु शुभकर्मफलप्रसूति रते नमस्तु रमणीयगुणार्णवाय शक्ते नमस्तु पदनिकेतने पुष्टे नमस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमस्तु नालिकनिवारणाय नमस्तु दुग्धजन्मभूते नमस्तु सोमामृतसूदराय नमस्तु नारायणवल्लभाय सम्पत्कजकलिनानि सम्प्रदानम सरोरायके तरुण मामे मन्ये यत्कडे अमोहन विधिशुभन शिष्टं वरेणुभुजे सरसिजन्नले सरसधवलतमासुगन्धमसुभे भगवती हरिवलय मन्निगति विनुमतिगुरुवनमयं दिग्धस्थिवे कनकुममुखापसुशोभं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकादिनाथ गृहिणी मौनपुत्रीं कमले कमलाख्यवल्ले वेत्नं करुणापूर्वतरङ्गिद्रपाङ्गी अवलोकमां किञ्चनानां प्रसम्पातमकुतुञ्जय स्तुवन्ति जस्तिमुभिरणं त्रयीमयि त्रिभुवनरमां गुणेकाग्रुद्रभाग्य भागिनी भवन्ति घोषविबुधसाय सुवर्णधरसुन्दरसकलं त्रिशन्नजवनयुतं इति श्रीमत्सङ्कराचार्यप्रियचरणधरसम्पन्नम् ॐ उग्रं सिंहां विषाणाभद्रमुद्रमामे सप्तं जनुष्ठेन सह सप्तमिकमहालक्ष्मी नमस्तुते ॐ त्रयम्बकं ददामि सुगन्धिं पुष्टिगुणरूपारूपमें ॐ नमो नमः बुद्धिश्वराय नमो नमः नमो नमः बुद्धिश्वराय नमः ॐ नमो नमः समेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नमः नागेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नमः सुरतेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नमः महाकालेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नमः ओंकारेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नमः त्रयंबकेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नमः भीमेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नमः कृष्णेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नमः वैद्यनाथेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नमः मल्लिकार्जुनेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नमः रामेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नमः केदारेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः लिंगराजाय नमो नमः ॐ नमो नमः महालोकनाथाय नमो नमः ॐ नमो नमः नर्मदा ॐ नमो नमः विश्वेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नर्मदा ईशानेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नमः उत्पन्नेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नर्मदेश्वराय नमो नमः ॐ नमो नर्मदेश्वराय नमो नमः ॐ श्रीलक्ष्मीसिंहाभ्यां नमो नमः हरि ओम् अथ यजुर्वेद चतुरंग चत्वारिंशत् अध्यायः ईशावास्योपनिषदं हरि ओम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता महागृद्रकस्य कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवे सतं समाः एवं नान्यथेतोऽस्ति न कर्माणि लिप्यते नर आशुर्यनाम ते लोक अन्धेन तमसावृताः संस्ते प्रेत्यायि गच्छति ये केचात्मनो जनाः अनिजदेकं तमनसो जावीयो नैनद्देव आप्नुवान् पूर्वमर्षत् तदभवतोऽन्यान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरि स्वादधाति तदिजति तनिजति तदनन्तर स सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वायतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न चिकित्सति यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः तत्र कोमः कः शोक एकत्वमनुपश्यत सपर्जगाशोकमकायमतृणमास्नावीरं सुधम पापविधम्
कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्यथा तत्यतो अर्थं व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधं तमसः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततभूय इव ते तामो इवो सम्भूत्याङ्गरतः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रूमधीराणं येनास्तद्विचचकिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीत्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततभूय इव ते तमो य विद्ययाङ्रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रूमधीराणं येनस्तद्विचचकिरे विद्या च विद्यं च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययामृतमश्नुते वायुरानिलममृतमथेदं भस्मातं शरीरम् ॐ क्रतु स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर अग्नेनयसु पथराय अस्मान् विश्वानि देव वपुनानि विद्मन् युयुध्यस्म जुहुराणमेन भूयिष्ठं ते नम उक्तिं विधेम हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं योषावादित्ये पुरुष सोषावहम् ॐ खं ब्रह्म हरि ओम्। अथ सामवेद उत्तरार्चिका एकविंशोऽध्यायः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाख्यभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवन् शस्तनूर्विव्यसेमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववे स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथ ऋग्वेद अपश्यन्त्वा मनसोचेकितानं तपोषजातं तपसो विभूतं इह प्रजामहिरहिरराण प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम अपश्यन्त्वा मनसा दिध्यानं स्वयं तनुरुत्व्यनाधमानम् उपमामुच्चाजुवती बभूय प्रजायस्व प्रजया पुत्रकामि अहं गर्भमदधामौषधीष्वहं विशेषु भुवने सन्त अहं प्रजा अजानय पृथिव्यामहं जनिषु अपरिषु पुत्रान् विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंसतु आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते गर्भं देहि शैशिनीवालि गर्भं देहि सरस्वती गर्भं ते अस्मिनो देवावा धत्तं पुष्करस्रजा हिरण्यायि अरण्यं निर्मन्थतो अस्मिना तं ते गर्भं हवामहे दशमे मासि सोतवे। हरि ओम्। अथ अथर्ववेदो संमांसिञ्चतु मरुतः सा पूषं सं बृहस्पति संहमायमग्निसिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे अग्ने जातान् प्राणोदमे सपत्नान् प्रत्यजातं जातवेदोऽनुजस्व अधस्पदं कृणुस्व ये कृतन्यवो नागसस्ते वयमदितये श्याम सीनीबाले पृथुष्टके या देवानामशीश्वसा जुषस्वहव्यमाहुतं प्रजं देवी दिदीढ्यना या सुबाहु संगूरीः सुषुमा बहुसुवरी तस्यै विपत्निर्हवि सीनीबाले जुहोतन राकामहं सुहवा सुस्तुति होवे शृणुतो न सुभगा बोधत्वत्मना शिव्यत्ववयपः
शुच्या अच्छिद्यमानय ददातु वीरं सतदाय मुख्यं ओम उग्रमीरमाणुर्भवतानघं ऋषिंघं विषाणावदनमूर्तिमुच नमामि ओम श्रीलक्ष्मीसिंहाभ्यं नमो नमः ओम उग्रमीरमाणुर्भवतानघं ऋषिंघं विषाणावदनमूर्तिं नमामि ओम श्रीलक्ष्मीसिंहाभ्यं नमो नमः स्वागतं भू सर्वैर्देव देवाः त्रागच्छ सर्वेषां मङ्गलं कुरु ओम नमः त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्युमुखमामृतं नमः नर्मदा सुरतेश्वराय नमो नमः ओम रंगरामाय नमो नमः ओम रंगरामाय नमो नमः ओम रंगरामाय नमो नमः ओम श्री गुरुचरणाभ्यं नमो नमः।